अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग फिर से एक नॉन वेज रेसिपी बना रहे हैं। पंजाबी ढाबा स्टाइल मटन ग्रेवी करी बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और टेस्टी रेसिपी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं। पंजाबी ढाबा स्टाइल में मटन ग्रेवी बनाने के लिए पहले हम लोग मटन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए एज यूजुअल पहले हम लोग मटन ऐड करेंगे। मैरिनेशन के प्रोसेस में हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। मैरिनेशन अच्छी तरह होने के लिए हम लोग इसमें कर्ड भी ऐड करेंगे, दही। सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मीट को अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसको मैरिनेशन के लिए 1 आवर तक इसको बाजू रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बाउल गर्म हो गया है, इसी में हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सिनेमन, कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, क्लोव्स और ब्लैक पेपर। इन सारे रॉ स्पाइसेस के साथ साथ हम लोग इसमें फेनेल सीड्स भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनी शेड में आते ही हम लोग इसमें जो स्लाइस्ड टमाटोस है वो ऐड करेंगे। ऑयल में टमाटोस थोड़ा सा पकते ही हम लोग चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एज इट इज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और भी अच्छा पकने के लिए हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इन सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा भुने गए तक हम लोग इसको 5 मिनट्स तक ऐसे ही पकाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह बॉईल हो गए बाद इसमें हम लोग जो पहले ही मैरिनेट करके रखे थे मीट वो ऐड करेंगे। मैरिनेटेड मटन ऑयल में अच्छी तरह भुने गए बाद हम लोग इसमें फिर से थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर भी ऐड करेंगे।
रेसिपी में थोड़ा सा ग्रेवी के लिए और थोड़ा वाटर भी मिक्स करेंगे। मीट बॉईल होने के लिए इसको और 30 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे, लिड क्लोज करके। मीट अच्छी तरह बॉईल हो गया है। फाइनल टच में हम लोग इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस पाउडर भी ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है। पंजाबी ढाबा स्टाइल में आज मटन ग्रेवी परफेक्टली बना है और देखते ही खाने को दिल कर रहा है। इमीडिएटली हम लोग इसको पैक करेंगे और नीडी पीपल को राइस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आज का ये वीडियो आपके घर पे भी कोशिश करिए, अपने बच्चों को खिलाइए और उनका कमेंट क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आजकल फेसबुक पे नवाब्स किचन पेज पे ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है, देखना मत भूलना और फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक सारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।